All right. So this topic was all about data types and file organizations, and in the end, the last section talks about real numbers. ठीक है. अगर इस चैप्टर का क्रक्स देखा जाए तो this is all about the storage medium, how variables are stored or they should be stored in the memory, how the memory access your data, which is covered in the file organization, how they are basically being organized, in what different ways they are organized. And lastly, it talks about the real numbers. When we say real numbers, it actually refers to a number which has a decimal in it. So how does the computer interprets or the computer actually tries to deal with or store them or tackle the numbers which have a decimal? And when we talk about the real numbers, we talk about the floating point representation. So most modern computers use the floating point binary to represent the real numbers. And the floating point binary makes the most efficient use of the register when it comes to present extremely large values, extremely small values, or the values that require a high degree of precision. ठीक है? So rather than saving the whole series of numbers, how does the computer actually deals with it? Calculation क्या होती है उसके पीछे? ठीक है? So when we talk about real numbers, either the numbers are extremely large or extremely small, or they require a higher degree of precision. Precision क्या होती है वो उसके ऊपर अभी बात करते हैं. रेंज क्या होती है उसके भी बात करते हैं, लेकिन आप एग्जाम्पल के तौर पे अपने कैलकुलेटर को इमेजिन कर सकते हो. There's a question. Shanzay, you're saying no to what? Sir, your screen isn't visible. My Sir, screen. and your voice is lagging a lot. Hmm. So I was saying that most modern computers, they use the floating point binary to represent real numbers. Real numbers, all of us know numbers which have a decimal. And the floating point binary makes the most efficient use of the register. Again, efficient use of the register actually refers to how much space it's going to occupy in your register. And when we talk about registers, you all know that registers are basically present in your processor. So when the register has to deal with extremely large values or extremely small values or the values which require a higher degree of precision. And I also said that we'll talk about the precision and the range concept later on. But right now, you just need to know that the numbers, it can be a pretty large number or a small number or a number which requires a high degree of precision. So this is basically the use of the floating point binary system. As an example, I can quote your standard scientific calculators. Each calculator comes with a capacity of, let's say, 10 to 12 digits on the display. And if your calculator has to present a number which is greater than 10 or 12 digits, तो वो 10 raised to power करके exponential value आपको show करना शुरू कर देता है. And students who take physics or let's say math, they are pretty familiar with the scientific notation. So I've taken a few examples, the standard scientific notations or the values that we use for Avogadro's number, speed of light, charge of electron, age of the universe, and their respective units as well.
So you can see the values, they are pretty large or pretty small. The charge of electron is pretty small, 1.60 into 10 raised to power minus 19, right? This is the scientific notation we are talking about. So since your calculator is limited to, let's say, 10 or 12 digits, so 1.60 into 10 raised to power minus 19, you're talking about 20 plus units or 20 plus digits, which cannot be displayed onto the calculator screen. Hence, आपको वो इस scientific notation में present करते हैं. Any questions? Should I move on? In the scientific notation, when you have 6.02, that's, I think, the Avogadro's number, I think, from the previous slide, into 10 raised to power 23. There are two components. One is the exponent and one is called the mantissa. Okay? And 6.02 into 10 raised to power 23 actually translate into 6.02, and then you have to add up at least 21 zeros, और फिर आपका decimal point towards the right जो है वो shift कर जाता है. So if you evaluate this particular value, so this is how you do it. However, I have also taken another value, which is 6.0214322156 into 10 raised to power 23. इस केस में भी आप इसी तरह करोगे कि decimal place जो है वो आपका shift करेगा towards the right if you are to evaluate this scientific notation. अब दोनों values में जो difference है वो एक ही है, and that difference is basically about the precision. However, both the numbers are pretty large, just that के जो second number है उसकी precision जो है वो थोड़ी सी बेहतर है. So precision जो है हम कहते हैं कि that is governed by the mantissa. जितने number of units या digits utilize हुए होंगे mantissa को represent करने के लिए, हम कहते हैं उस नंबर की उतनी प्रिसिजन या वो नंबर उतना प्रिसाइज है. Whereas the exponent actually refers to the range. Range का मतलब कि how many zeros you are going to add, how many digits we are basically using as an approximate. ठीक है? So both the numbers are pretty large. However, the second one has greater precision. So we can say that mantissa in a scientific notation defines the precision of the number, but the zeros we add is the approximation. ठीक है, हम assume कर लेते हैं कि okay, since we don't know the actual numbers, so we're gonna add up zeros. जब zeros add करते हैं तो क्या होता है कि approximation में number चला जाता है. So all in all, the mantissa defines or governs the precision of the number, and the exponent governs or defines the range of the number, how many places the decimal point is going to move. Should I move on? Yes. Yes, Yeah. sir. Charging. Finally picking up pace. Now in this case, I think this is the charge of the electron. 1.60 into 10 raised to power minus 19.
उसको भी जब आप इवैल्यूएट करोगे तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो उतनी प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव कर जाता है. सो हमने ये डिराइव किया कि exponent when it is negative you move the decimal point to the left, exponent when it is positive you move the decimal point towards the right to add the approximation in your number. ठीक है. और floating point representation, the floating point is actually referring to this decimal point, or in other words we call this a binary point. ठीक है. ये आपको मैथ्स में भी आता है, ये आपको फिजिक्स में भी पता है. So when the exponent is positive, approximation is added onto the right hand side. When the exponent is negative, the approximation is added onto the left hand side. You can take a screenshot if you want. Moving on to the next slide. Now over here, I've taken a register, which is a 16-bit register. जिसमें 10 bits are allocated for the mantissa and 6 bits are allocated for the exponent. And the number is basically stored in the binary form. ठीक है. So ये एक standard form है जो कि IEEE ने probably 65 के अंदर standardize कर दी थी. उससे पहले क्या था कि depending on the processor, its architecture, how it is designed, उसके अंदर जो registers हैं उसके अंदर पहली बात तो ये कि वो registers different bits के होते थे. ठीक है. किसी ने 16 बिट का बना दिया, किसी ने 8 बिट का बना दिया, किसी ने 32 बिट का बना दिया, एंड सो एंड सो फोर्थ. और उसके अंदर जो बिट एलोकेशन होती थी वो भी डिफरेंट होती थी. किसी का मैंटिसा पहले आ रहा है, किसी का एक्सपोनेंट पहले आ रहा है. सो दिस इज हाउ इट यूज्ड टू बी. बट IEEE ने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया था, एंड आई थिंक इन 65 that okay, the first set of bits are going to represent the mantissa and the remaining are going to represent the exponent. So in this particular standard example, we are going to assume कि मैंटिसा जो है फर्स्ट 10 बिट्स हैं और रिमेनिंग 6 बिट्स जो हैं वो आपके एक्सपोनेंट है. ठीक है. और एग्जाम में भी इसी तरह होता है कि although the calculation does not get affected, you just have to see where the exponent is, where the mantissa is. उसने काफ़ी ज़्यादा क्लियरली आपको लेआउट दिया होता है उसका. अच्छा जी. फिर बात आ जाती है साइन बिट की. साइन बिट क्या है? द लेफ्ट मोस्ट बिट of the mantissa and the leftmost bit of the exponent. They actually refer to the sign bit. So when the sign bit of mantissa is 0, that means it is a positive number. If the sign bit of the mantissa is 1, it is referred to a negative number. और इसी तरह exponent में आ जाए तो if the sign bit of the exponent is 0, that means it is a positive number, and the floating point or the binary point or your decimal point is going to move towards the right hand side. And if it is 1, the sign bit of exponent is 1, then we say that the exponent is negative number, and the approximation or the binary point or the floating point or the decimal point has to move towards the left. Are we clear on this? Yes, sir. अच्छा. एक इसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि कुछ अर्सा पहले क्या होता था कि रजिस्टर आपको इसी तरह गिवन होता था क्वेश्चन में, और आप अगर नोट करो तो मैंटिसा का जो साइन बिट है उसके साथ एक डॉट है. ठीक है. दैट्स द बाइनरी पॉइंट. वी कॉल दिस एन इमेजिनरी बाइनरी पॉइंट. ठीक है. सो क्वेश्चंस में वो गिवन होता था, एट टाइम्स वो नहीं भी होता.
ठीक है, I won't say the recent format or the old format. Sometimes it is there, sometimes it is not there. But you always consider the imaginary binary point right next to the mantisa's sign bit. ठीक है, so regardless के mantis किस order में है, आपका जो साइन बिट है उसके साथ एक इमेजिनरी बाइनरी पॉइंट हम कंसिडर करते हैं. सो कीप दैट इन माइंड. ठीक है जी, आगे चलें. Yes, sir. अब आ जाएं इसकी कैलकुलेशन पे. हाउ इट इज डन. एग्जामिनर आपको बताता है कि आपके कितने बिट्स का रजिस्टर है. वो आपको ये भी बताएगा उसमें कितने बिट्स जो हैं वो मैंटिसा के हैं, कितने बिट्स जो हैं वो एक्सपोनेंट के हैं. ठीक है, और बाइनरी नंबर भी गिवन होता है. तो आपने अपने रजिस्टर में वो बाइनरी नंबर लिखना है. और उसके बाद वो कहेगा कि जी ये जो बाइनरी नंबर है, पहली बात तो ये कि both the mantissa and the exponent are in the 2's complement form. So you are to calculate the denary value of this binary number, which is present in so and so bits of register, with so and so bits allocated for mantissa and so bits allocated for exponent. तो अभी मैं आज सिर्फ एक ही ये एग्जांपल कर रहा हूँ आपके साथ. So since we have the register, we have the binary number as well. It's 0, 1, 1, 0, 1, and then all zeros. In the end, we have two ones. 16-bit register, 10-bit for the mantissa, 6-bit for the exponent. So सबसे पहला स्टेप जो आपने करना होता है वो ये करना होता है कि आपने अपना एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना है. ठीक है, since the exponent is given or let's say assigned 6 bits in this particular example, तो you put your exponent against a number gadget. ठीक है, मैंने ये भी बताया कि साइन बिट को देखो. साइन बिट कौन सा है? द वेरी फर्स्ट बिट, नॉट द फर्स्ट बिट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट which is on the leftmost, which is actually the leftmost bit. तो वो क्या है? वो जीरो है. दैट मीन्स आवर एक्सपोनेंट इज सपोज टू बी पॉजिटिव. ठीक है, नंबर गैजेट उसी तरह जिस तरह नंबर कन्वर्जन्स में हम रखते हैं. So 1, 2, 4, 8, 16, and this is written as -32. Why? Because the leftmost bit is actually the sign bit. When it is negative, there will be a 1 here. So this will always be a negative value. Number gadget में रख के आपने calculate किया and you calculated exponent equivalent to 3. Which actually means that this mantissa, this is actually representing the mantissa. So this number is actually into 2 raised to power 3, something 2 raised to power 3. You remember the imaginary binary point which is at this point very next to the sign bit. The exponent is 3. That means that the binary point is going to shift to the right hand side 3 places. So you are going to shift your binary point over here. And then you are to consider the ones. Okay, you are going to ignore all the zeros. All the zeros are going to be ignored on the left hand side or the right hand side because they are insignificant. They don't hold any value. And you are going to put this against a number gadget. अच्छा, जहाँ पे आपका binary point मूव करता है या उसकी करंट पोजीशन होती है, वी आल्सो कंसिडर दैट टू बी द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट पे क्या होता है? मिड पॉइंट पे वैल्यू होती है 0 नंबर गैजेट पे. ठीक है, मिड पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पे आपका उसी तरह होता है 1, 2, 4, 8, 16 सो ऑन सो फोर्थ. और मिड पॉइंट से राइट हैंड साइड पे क्या होता है कि होता तो वही मल्टीपल है
2, 4, 8, 16, 32, and so forth. But it's actually 1 over 2, which is actually 0.5, 1 over 4, which is actually 0.25, 1 over 8, 0.125. ठीक है, so आपको ये values लिखनी होती हैं on the right hand side of the midpoint. When you put it against the number gadget, तो हमारे पास कुछ इस तरह की नंबर आता है, which is actually 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, 0.5 के नीचे 1 है. So we come out to the conclusion that this is 6.5. So this is the value or the binary value of this binary. So we can say that this whole binary under the base 2 is equivalent to 6.5 under the base 10. This is basically the answer. ठीक है, इसमें और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें और भी चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो let me know if you have understood this concept. The very first step, find out the exponent. Look at the exponent sign bit. That identifies the exponent is positive or negative. If positive, the binary point shift towards the right hand side. If negative, the binary point shift towards the left hand side. बाइनरी पॉइंट कहाँ पे है? एक इमेजिनरी बाइनरी पॉइंट होता है. कहाँ पे? मैंटिसा के साइन बिट के साथ. ठीक है, वो आपको एग्जामिनर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता. ठीक है, अगर तो दिया हुआ है तो इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस. अगर नहीं दिया हुआ तो इमेजिनरी बाइनरी पॉइंट एग्जिस्ट ऑलवेज राइट नेक्स्ट टू द साइन बिट ऑफ द मैंटिसा, और उसने फ्लोट करना है. सो एक्सपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है. वो आपने पहले कैलकुलेट करनी है कि एक्सपोनेंट क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और उसकी वैल्यू क्या है. बिकॉज वैल्यू से डिटर्मिन होगा कि वो कितनी प्लेसेस को मूव करेगा, वेदर ऑन द राइट और द लेफ्ट. सिंपल. एनी क्वेश्चंस? Sir, will the exponent always be the first 6 digits from the right? आमना ये बात मैं कर चुका हूँ कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है. देयर विल बी 4 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. 1 कि कितने बिट्स का रजिस्टर है. 2 कितने बिट्स मैंटिसा के हैं. 3 कितने बिट्स एक्सपोनेंट है. एंड 4 both the mantissa and the exponent are in 2's complement form. So this standard information is always given to you in the question. वो सिर्फ आपसे ये कहेगा कि Okay. जी फाइंड आउट द डेनरी वैल्यू. तो अगेन द प्रोसेस रिमेन्स द सेम. एक्सपोनेंट निकालो, एक्सपोनेंट निकाल के मैंटिसा में बाइनरी पॉइंट को शिफ्ट करो या फ्लोट करो. कहाँ पे फ्लोट करो? दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट. पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेगा, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेगा. वंस दैट हैपन्स, आप नंबर गैजेट में रखोगे और अपना नंबर कैलकुलेट कर लोगे. इट इज़ एज सिंपल एज दिस. ठीक है, यू कैन गो थ्रू द कंटेंट फ्रॉम द बुक एज वेल. आई डोंट माइंड, आई वोंट से कि यू शुड नॉट, बट even if you go through the series of lectures based on the real numbers, इसके बाद normalization भी आती है इसकी, तो I think you will be good to go. They might follow a different procedure which might confuse you, but I always teach the floating point representation from this. ठीक है, आगे चलें. Yes, sir. Okay, so another example, 16-bit register, 10 bits for the mantissa, 6 bits for the exponent. Look at the sign bit of mantissa and the exponent. Both are 0. So positive mantissa and positive exponent. Positive mantissa means it's going to be a positive denary number. Positive exponent means that the imaginary binary point is going to float towards the right hand side. So पहला स्टेप क्या करना है कि आपने एक्सपोनेंट को कैलकुलेट करना है. एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने एक्सपोनेंट का बाइनरी ले लिया.
उसको नंबर गैजेट के अगेंस्ट रखा और हमारा एक्सपोनेंट आया 2 in this particular case. That means the binary number into 2 raised to power 2. That's basically our final number जो कि scientific notation में present किया जा सकता है. Imaginary binary point is right next to the sign bit of the mantissa. It is going to move or float 2 places to the right. So it comes here. And then we are to consider the maximum, let's say the first or the last ones. वहाँ तक हम numbers को consider करते हैं. Zeros को हम ignore कर देते हैं. The binary point becomes the midpoint, which is actually at 0. You don't have to mention this वैसे. और उसको हम number gadget के against रखेंगे. ठीक है. So 1 0 1 0 1. So 1 0, this is the midpoint, 1 0 1. उसको हमने number gadget पे रखा. So this is 1, this is 2, 0.5, 0.25, 0.125. ठीक है. इसको add up करो. 2 plus 0.5 plus 0.125 is equals to 2.625. So that becomes our answer. आप उसको final इस form में भी लिख सकते हो if you want. हाँ जी, any questions? Do we all get this? सर जो मैंटिसा का साइन बिट है, व्हाट इफ दैट्स अ 1 और हम जब बाइनरी पॉइंट को शिफ्ट कर लेते हैं, उसको नंबर गैजेट के अगेंस्ट पुट करते हैं, तो डू वी काउंट दैट 1 एज समथिंग? Yes, obviously. हम उसकी तरफ आएंगे. अभी तो ये बेसिक बहुत simplest example मैंने आपके सामने रखी है. Yes, the exponent can be a 1, the mantissa can be a 1 sign bit, or yes, they are considered, they are part of the calculation, they will come into play. ठीक है. अभी का मुझे बताओ कि अभी जितना कॉन्सेप्ट हुआ वो समझ आया? यस सर. चलिए जी, आगे चलते हैं. Now 16-bit register, 10 bits for the mantissa, 6 bits for the exponent. Mantissa is positive, that means ultimately हमारे पास जो denary value है that's going to be positive. The negative exponent, why? Because the sign bit is 1. उसका मतलब क्या होगा कि हमारा decimal point float करेगा towards the left hand side. अच्छा, सबसे पहला काम एक्सपोनेंट को कैलकुलेट करना है. एक्सपोनेंट को हमने नंबर गैजेट में रखा 1 2 4 8 16 minus 32. आंसर आया हमारे पास -2. दैट मीन्स द बाइनरी पॉइंट इज गोइंग टू शिफ्ट 2 places टुवर्ड्स द लेफ्ट. ठीक हो गया, राइट? सो जब ये होगा तो आपके पास बना 0.001. And now you're going to put this against the number gadget. Value आ गई 0.125. Can be written in this form as well. Otherwise, even if you write this, because that's the requirement of the question, the denary value is calculated. But please make sure कई दफ़ा question में उसने answer के लिए space दी होती है, तो you are supposed to write that value over there. Working भी होगी और फिर आप उसका आंसर लिखोगे. It can be written in this form that that this binary, the given binary, is equivalent to 0.125 under the base 10. Do we all get this? Simple है. ठीक है, आगे चले. If you have the pen and paper, try to solve these questions. Practice. The first 2 questions are basically in which you have a 16-bit register, 10 bits for the mantissa, 6 bits for the exponent, and again based on the standard IEEE has set, हमारे first 10 bits are mantissa and the last 6 bits are exponent. ठीक है. दूसरा जो question है that is basically of 8-bit register in which 4 bits are for the mantissa, 4 bits for the exponent. Again
you're not being notified कि mantis कौन सा है और exponent कौन सा है, so you are going to go with the IEEE standard, in which it says that the first bits are going to be represented or representing the mantissa, and the remaining bits are going to be representing the exponent. Find out the values, let me know the answers. पहले क्वेश्चन में आई थिंक पॉजिटिव मैंटिसा पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, दूसरे में आई थिंक द पॉजिटिव मैंटिसा नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तीसरे क्वेश्चन में पॉजिटिव मैंटिसा पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, एंड देन द फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो पॉजिटिव मैंटिसा नेगेटिव एक्सपोनेंट. Anyone calculated the first one? आंसर बता दें. 13.5. 13.5. I don't have my graphic tablet plugged in. 13.5. Anyone calculated the second one? Sir, I did, but I'm not sure. कोई बात नहीं, बताओ, कोई बात नहीं. 0.15625. 0.15625. Anyone with the third? Waiting for the third and the fourth answer. यहाँ पे इसको मैं end करूँगा, and we will solve these and discuss further concepts related to it. सर मेरा 6 आ रहा है. किसका? First, third का? Yes. 6. Okay. Anyone with the fourth answer? सर मेरे थर्ड का डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो आप बता देंगे कैसे करना है. आप बताओ, अपना आंसर बताओ.
सर मेरा आ रहा है 7.09375। 7.09375। फोर्थ का आंसर बताएं। सर 0.21875 आ रहा है। किसका? फोर्थ का? फोर्थ? यस, फोर्थ का। फिर से बताओ। 0. 12875। 1875। अच्छा जी। सर 0.2187। यस। 21875। 21875। ओके जी। यहाँ पे हम इसको पॉज करें। ठीक है। we're gonna end the class here, and tomorrow we're going to move forward, discuss further examples, further scenarios. But first of all, we are going to solve these questions. We're going to start with these questions. And also, tomorrow you log in through this account. This account was fairly better than my other account. ठीक है जी।